Guys, it's me, Devansh. Oh damn. Okay. अभी डिसलाइक हो जाएंगे यार. अच्छा anyways, हाँ, so welcome to the fourth episode of Casual Talks. And it's that time of the day जिस टाइम मेरा दिमाग चलता नहीं है. एंड मेरा दिमाग इतना धीरे भी नहीं चलता कि मुझे नींद आ जाए. Currently it's 3:15 if you can see. Okay, like it's 3:15. And today is the first day of my college and my first class is at 9 a.m. and I don't know why am I still awake, but theek hai. So in this video I'm gonna talk about the first year courses that I had. So I'm officially entering second year at BITS Pilani KK campus, and I still feel like a fresher, to be honest, because half of my sem went away. And yeah, and it's something that you have to kind of deal with. So मैं पूरे दिन सोच रहा था कि मुझे क्या बनाना है, वीडियो किस पे बनाऊँ. एंड देन माई माइंड डिडंट हेल्प मी एट ऑल. एंड अभी रात में जब मैं सोने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा क्लास है, it's giving me such awesome ideas कि I have to wake up and kind of note it down. मतलब क्या यार. तो ठीक है, in this video I'm going to talk about the first year courses that I took as a fresher. Guys, you were asking about my Cgpa. So our Cgpa, like the whole batch Cgpa came up I think 1 or 2 days back. So I've gotten my the final Cgpa of the first year recently. So I'll add that towards the end because तुम्हारे लिए इंसेंटिव है वो देखने के लिए पूरा वीडियो. Yeah, please skip मत करना यार, please. Off with the courses that I had. So in the first semester of my first year, I had registered for 7 courses. I mean, those are fixed by BITS and you can't choose the courses. That starts from the second year. First year mein, the 7 courses that I had were okay, I'll start off with biolab. Yeah, we had a course called biolab, and the hardest part was attending every class of it. So labs are compulsory for us and तुम्हें हर एक क्लास अटेंड करना होता है, वरना तुम you lose marks. It's not the case with the lectures because you can like miss any lecture and तुम मिस कर सकते हो. बट biolab was pretty chill and you had, because like they also know कि तुमने biology नहीं पढ़ा है, so they kind of guide you well and it's pretty chill. Like I got a pretty decent grade and like without doing much, so सही था. Then comes जनरल बायोलॉजी. हो इसने इतना दिमाग खाया था ना फर्स्ट सेम में. तो लाइक फर्स्ट सेम में तुम्हारे पास ऐसा होता है कि मुझे अच्छा सीजी पे लाना है, ठीक है, मतलब तुम्हें ऐसा काइंड ऑफ घर में फीड करके भेजते हैं कि तुम कॉलेज जा रहे हो अभी, ये सब आएगा लेकिन तुम्हें सीजी पे मेंटेन करना है, ठीक है. तो ये सब था. तो इस कोर्स में मैंने इतनी मेहनत करी है ना, लेजिट बहुत टफ कोर्स था जनरल बायोलॉजी. सो दे टॉट अस अबाउट a lot of things. So like I think they taught about like plants का बहुत कुछ, then animals का, like okay, that's how I describe biology, like कुछ idea नहीं है, but a lot बहुत कुछ था, like very deep course. And there were a lot of chapters, so काफ़ी भयंकर course था. Then general chemistry. So general chemistry is pretty chill, like it's mostly your JE thing only. So they'll have an organic chemistry part, physical chemistry, and बहुत थोड़ा सा inorganic भी, the DNF and coordinate वाला, I think, as far as I remember. Yeah, so the organic will be pretty chill. Like it's mainly your JE portion only, so that was pretty chill. Then comes workshop practice. Now workshop practice is a course in which you need to like it's by the mechanical department, and you have these various sophisticated machines and you need to kind of work with them. So you have metal lathe, तुम ऐसे वुड का पीस बना के उसको डिज़ाइन करोगे, उस पर मेटल के पीस को डिज़ाइन करोगे, कारपेंट्री एंड ऑल. तो इट्स काइंड ऑफ लेबरियस बट इट्स प्रीटी चिल. लाइक हाँ, एंड इसमें भी ये भी कंपलसरी होता है. नेक्स्ट इज टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग. दिस कोर्स वॉज सुपर लाइट, ओके. एंड इस कोर्स में तो मैं लाइक बस अटेंडेंस के लिए जाता था बिकॉज दिस हैड एन अटेंडेंस कॉम्पोनेंट. एंड इस कोर्स में तो मतलब तुम बस एग्ज़ाम के पहले पढ़ो. इवन बायोलैब में भी ऐसे ही था. बट TRW में तो तुम TRW शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, प्रीटी ईजी कोर्स. बट लाइक हाँ, इट्स अबाउट राइटिंग रिपोर्ट्स, वेरी इन्फॉर्मेटिव. But yeah, it is what it is.
And the next course was mechanical oscillations and waves. Now this course, okay, like आई डोंट नो मुझे मिड सेम्स में मार्क्स कैसे आए, बट मैंने मिड सेम फोड़ा था इस कोर्स में. लाइक मैं लाइक ठीक है, तुम कॉलेज में आओगे तो तुम इसके बहुत किस्से सुनोगे. मेरे से आया, मतलब वही दोस्तों से मेरे. तो ऐसा था कि मिड सेम के बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था. ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता समझ में. एंड मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गया था, एंड बाय लक एग्ज़ाम में वही बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आ गए. तो आई वॉज लाइक, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे मिड सेम में. एंड इस कोर्स में मेरा ए लगा था, पता है. लाइक दिस वॉज द ओनली कोर्स मेरा ए लगा था. सो हैप्पी. एंड इसमें मुझे बहुत कुछ पता ही नहीं था मिड सेम के पहले तक. उसके बाद मोटिवेशन आया पढ़ने का. तो काफ़ी सही था ये कोर्स. आई लाइक दिस कोर्स. द नेक्स्ट थिंग वॉज मैथमेटिक्स 1. सो we have 3 mathematics course, one like M1, M2 and M3. So M1 is in the first sem, M2 in the second sem, and M3 का कल लेक्चर है 9 बजे, जो मोस्टली मिस हो जाएगा मेरा, बट ठीक है. तो बेसिकली हर एक सेम में एक मैथ्स होता है. तो M1 was about I guess series and vectors and यार पता नहीं यार, मतलब मैथ्स के कोर्सेज ऐसे होते हैं कि आई यूज टू लाइक मैथ्स अ लॉट, ओके, बट लाइक आफ्टर कमिंग टू कॉलेज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैथ्स में क्या हो रहा है. मतलब मेरा एक दोस्त है मदन, ठीक है, ही टीचेस मी मैथ्स एवरी सेमेस्टर. आई एम नॉट इवन किडिंग. एवरी सेमेस्टर बिफोर एग्जाम्स आई सिट विद दैट गाय एंड ही टीचेस मी मैथ्स लाइक एनीथिंग. ओके, सुपर ऑसम गाय. ठीक है, तो मैथ्स में इट वॉज अबाउट सम जैकोबियन एंड ऑल केम टुवर्ड्स द एंड. स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दैट. पूछ मुझसे. ठीक है. नेक्स्ट वॉज, ओके, नाउ वी मूव टू द सेकेंड सेमेस्टर. ओके, डिस्क्लेमर, सेकेंड सेमेस्टर सिर्फ आधा हुआ है. ठीक है, उसके बाद हमें घर भेज दिया था बिकॉज ऑफ द कोविड सीन. सो वी वर सेंट बैक आफ्टर द मिड सेम्स. ठीक है, सो आई बहुत सारे कोर्सेज का जो बचा वाला पार्ट था वो मैंने मोस्टली अटेंड भी नहीं किया था. एंड लाइक बच गया उस समय कैसे तो करके. ठीक है, सो केमिस्ट्री लैब, इट्स लाइक बायो लैब इन विच बट लाइक पीपल एक्सपेक्ट यू टू नो स्टफ एंड यू हैव वाइवा एंड ऑल. बायो लैब में वाइवा भी नहीं होता था, मतलब बहुत लाइट. केमिस्ट्री लैब में वाइवा होता है एंड दे आस्क यू एंड दे ग्रेड यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ठीक है, केम लैब डायनामिक्स वाज अ कोर्स. एंड सो थर्मोडायनेमिक्स तुम जनरल केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लेकिन ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना वो अलग ही है यार. मतलब तो मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ. ठीक है, वेन एवर यू ट्राई टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स it just gets more and more weird and complicated. Like 11th my first time at thermodynamics in chemistry, I was like in physics or chemistry, I was like बस भाई, मतलब मैं तो सब समझ के गॉड में सब आता है थर्मो में. then when I revised during class 12th I was like अभी ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कैसे आया. and then I was like चलो ठीक है, अब तो थर्मोडायनेमिक्स आता ही आता है. then मैंने जे एडवांस दिया. I was like fuck, ये तो मेरे को आता ही नहीं है, कैसे हुआ. and then उसके बाद तो ठीक है, कॉलेज में आके मैंने पढ़ा वापस एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या हुआ था. बट थर्मोडायनेमिक्स वाज ओके, स्टिल लाइक आई मैनेज टू गेट गुड ग्रेड इन दैट. सो ठीक है. एंड नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, शॉर्ट फॉर्म ईजी. अब ईजी में there is a software called Autocad which is used for kind of basically I won't say designing, but it's like so जितना मैंने पढ़ा था, so it was half only. So we had to kind of convert a 3D object. We had to kind of okay, it's hard to explain, okay. and then the next was mathematics 2. मैं M1 sem 1 में था, M2 sem 2 में. ठीक है, तो M2 में basically it was all about matrices, and this one course has pulled down my GPA so much now. I missed one quiz, okay. like एक quiz था, वो मैंने एक बहुत गंदा मैसअप किया था. like मेरे 40 में से आई थिंक 10 आए थे मार्क्स. ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा पूरा कोर्स का ग्रेड ना ऐसा जुप से पीछे शिफ्ट हो गया इसमें, तो लग गई थी. M2 was about matrices, determinants and basically linear transformation of these matrices. It was an interesting topic to be honest initially because it was matrices and matrices light है. but तुम लोग अभी matrices पढ़ रहे हो ना, बहुत चिंदी है यार. come to college, you will understand the real
how complex matrices can be. Trust me, खत्म हो गया था मैं. Then comes probability and statistics. So this course is one of the courses that I really genuinely liked, and especially towards the end. So initially I kind of got lost. Okay, uh, so I had to kind of give time to cope up. But this was the one of the most practical courses that I did in the first sem, and even though I didn't get a very good grade in this, but I kind of liked the coursework. I didn't study statistics that much, but yeah, probability was something that I really loved. The physics laboratory tha agla. Physics lab was a simpler version of chem lab, I would say. Chem lab was the hardest, okay. So bio lab सबसे chindi, physics lab, then chem lab. Chem lab is the toughest because bio है उसमें. Physics lab में there were MCQ questions, but those questions were like easy and bearable, तो वो हो जाते थे. And you just had to kind of read it once, and yeah, it was pretty easy. Then was electrical sciences. Now electrical sciences में the grading was pretty bad, but yeah, I mean there was a quiz component जो scale up हो गया था, and ES is about I mean electrical sciences. So तुम you start off with basic laws, the normal I don't remember the name now, but it's like this mesh loop, mesh law, voltage, like nodal analysis, mesh analysis, and some laws, some Norton law, stuff like that. And towards the end, like semiconductors bhi aata hai isme. So you study semiconductors, transistors. Wo part like we didn't study because college was over. Okay, I didn't study. People who are giving compres, they studied. That's a story for another day actually. But so that was the thing. It's about all that. And computer programming was another course, and this was the four unit wala course, and this was one of the most interesting courses again. Prop stats was theoretical, and in this computer programming they taught us C. C, if you know, is a programming language which is very popular, and I'm pretty sure C++ is a कह लो कि it's not exactly the same, but it's very similar to C++. ठीक है, तो that was the thing about the courses that I did. If you ask my favorite course, I would say computer programming and prop stats, and I also like DemoW because of the luck factor that I had in the course. And the worst course, if you ask me, I had really hard time studying M2. Like I literally asked Madan, which is like my great friend, to teach me something for like a lot. I bothered him a lot before the exam. So yeah, that was one course that I didn't like. And yeah, it's time for the Cgpa that you guys asked. So my Cgpa is 8.43. In the first sem it was 8.71, and in the second sem, because of M2 obviously, my Cgpa was 8.2. So सब मिला के 8.43. So yeah guys, if you kind of like this video, then like this video. If you like the content, then subscribe यार. Please 1K होने वाले हैं यार. Please just let me reach 1K please. Okay guys, thanks for watching.